Burning Question, presented by Samsonite. A very good evening. You're watching The Burning Question and I'm Deepthi Sachdeva. For the third straight day, our champs continue to be on the streets because they're fighting for their dignity, they're fighting for their self-respect. And where is the man in the center of this controversy? He's brazening this all out. He says, nothing doing, I am not going anywhere. The burning question is, for how long can we continue to let this man stick on to that chair? We'll track that story, and another big story that is developing is the Pfizer controversy. And does the Congress remember how they were actually trying to push that vaccine? So before we begin with our debates, let's quickly get you the headlines on top of it. Champs continue to fight for justice. India says nothing but sack the Wrestling Federation boss, Brij Bhushan Sachs. In the dock for harassment charge, Brij Bhushan now remains defiant. He's brazening this out even as demands for his sacking continue. This is Nitish's Neta stoking a huge controversy, threatening of Karbala if Prophet is insulted. Swati Malewal harassment tape is out. Drunk lout is seen harassing the DCW chief in the video. The government setting the record straight, calling out the West propaganda, but the BBC continues to defend the documentary series. And it is a huge face-off over Pfizer confrontation in Davos. The government is questioning the Congress. First up, let's put our spotlight on everything that's happened so far on the Big Republic campaign. It's a campaign now that is getting bigger. It's a campaign that all of you have also joined in. It's a campaign for dignity. It's a campaign against those who are sitting at the helm and they believe that they can actually get away with absolutely anything. This is about the Wrestling Federation chief, his brazenness, his being drunk for power, and on the other side, you have the champions who are decorated, who won laurels for the country. They today are still protesting on the streets. And let's not forget, you're having round 2 of the all-important meeting between the sports minister and these athletes. Where really is the story moving ahead? Is there a resolution in sight? And why is this man still not sacked? The entire story first up, and then we debate. कि आपको 24 घंटे जो अनुराग बोले गए, जो न्यूज़ चल रही है वो सही है कि गलत है? क्या 24 घंटे की आपको रिजाइन करने के लिए? नहीं कोई रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए रिजाइन करने के लिए। क्या जवाब आपने दे दिया, भेज दिया? रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए। आपने जवाब भेज दिया? 24 घंटे के अंदर जवाब। खिलाड़ी जो अनुराग ठाकुर जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तब तक यही है, कहीं नहीं जाने वाले। प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते।
And earlier in the day, when Republic confronted this man and asked him, when will you resign? He said, why should I resign? I've done nothing wrong. And he said, if I open my mouth, there is going to be a tsunami. So that, ladies and gentlemen, for you is the defiance that is written all over his body language, his demeanor, and the very fact that in spite of these very, very serious allegations, he still continues to be the WFI boss. Let's say good evening to our panel of guests. Karan Ambardar is a sports anchor, commentator with us on the broadcast. Rameshwar Yadav ji is a wrestler and actor, also joining us on the broadcast, along with Rakesh Singh ji, who is a coach and the General Secretary of the Haryana Wrestling Federation. Also, Varsha Chaudhary is a wrestler and joining us on the broadcast. We are just waiting for Harpal Singh Bedi, who is a senior sports journalist, to also join us on the panel in just a bit. But let's begin with राकेश सिंह जी, if you can hear me. राकेश सिंह जी, आप कोच और जनरल सेक्रेटरी है सर हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ राकेश जी कि ऐसा क्या है रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के पास, या ऐसी कौन सी उनके पास पावर है, ताकत है कि इतने सीरियस एलिगेशंस होने के बावजूद, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इशारे करने के बावजूद कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, वो ये कहते हैं कि मैं क्यों छोड़ूंगा अपनी कुर्सी, मैं तो नहीं दूंगा रेजिग्नेशन. मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए सर. मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शरण जी कोई इसके लिए नहीं बने हैं और ना वो सबसे इतना प्यार करते हैं. वो हिंदुस्तान के पहलवानों के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे. नहीं, आप राकेश जी क्या कहना चाहते हैं? आप ब्रिजभूषण जी के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं इस समय? नहीं, मैं भी बच्चों के साथ हूँ और जो सही बात है मैं उसके साथ हूँ, गलत बात के साथ नहीं हूँ. ठीक है, आप कहते हैं आप इस समय एथलीट्स के साथ हैं और पूरा देश उनके साथ है. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कौन व्यक्ति इस समय हो सकता है. एंड वर्षा के पास चलने की कोशिश करते हैं. वर्षा, आप भी एक रेसलर हैं, आप एक पहलवान हैं. मुझे ये बताइए, जब इस तरह के किसी के खिलाफ आरोप लगते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये तो भाई हरियाणा से है, अरे ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये पहले क्यों नहीं बोली, लगता है दाल में कुछ काला है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है. वर्षा, तो ऐसे बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी? जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, ये सब हुआ है, तो वो सामने तो नहीं, उनके पास कुछ प्रूफ तो नहीं है. अगर वो प्रूफ दिखाए, अगर सच में हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए. और जैसे मैं 2015 से मैं भी रेसलिंग से अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ. इससे पहले मैं करण के पास जाऊं, वर्षा, क्या आप ये कहना चाहती है कि जब तक प्रूफ सामने नहीं आएगा तो जो ब्रिजभूषण जी है वो अपनी कुर्सी पर बने रहे? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, चाहे ही लड़कियां इस तरह आकर ठंड में मजबूर है सड़क पर बैठने के लिए, तो आप लड़कियों से इस समय कह रही हैं कि आप प्रूफ दीजिए. प्रूफ दीजिए नहीं, सड़क पे कौन है? अगर क्या बोलता है कि कुछ ही तो वहां पे हरियाणा के ही बच्चे क्यों है और स्टेट के बच्चे क्यों नहीं है वहां पे? अगर सबके शोषण हुआ है तो और स्टेट के लड़कियों के साथ यही तो दिक्कत है वर्षा जी, यही तो दिक्कत है कि जब भी कोई महिला लड़की आवाज उठाती है तो पहले तो ये पूछा जाता है अभी तक खामोश क्यों थे, उसके बाद कहा जाएगा प्रूफ दीजिए, आई विटनेस कौन था, यही तमाम सवाल उठाए जाते हैं. और यहाँ पर ये हो रहा है कि अरे ये तो हरियाणा की लड़कियां बोल रही हैं, उत्तर प्रदेश की लड़कियां क्यों नहीं बोल रही? क्या बोलने से हो जाता है ये सीधा? अगर हम किसी पे भी, ये तो किसी को भी बोल देंगे हम ऐसे, उसका कोई सबूत तो होगा. क्यों बोलेंगे आप बताइए? इनको क्या मिलेगा? वर्षा, इनको क्या मिलेगा? बोलने से आरोप, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इन्होंने सिर्फ देश में नहीं विश्व में अपना नाम कमाया. वर्षा, मुझे ये बताइए कि इनका क्या एजेंडा हो सकता है, क्या लगता है आपको?
वर्षा, आप सुन पा रही हैं मुझे? Okay, I think we'll just fix that line with Varsha, because that is the real problem, the crux of the entire story, Karan. And with your permission, I also want to say good evening to Harpal Singh Bedi, who's a senior sports journalist, also on the broadcast now. And before I come to Karan and to Bedi ji, रामेश्वर यादव जी, आप मुझे बताइए सर, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? मतलब एक तरफ वो बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए इतने लॉरेल्स कमाए हैं, और इन्हीं की वजह से फेडरेशंस हैं, फेडरेशंस की वजह से एथलीट्स तो नहीं है ना? नहीं, फेडरेशन में कोई आदमी खुले मन से किसी पहलवान को थप्पड़ मार सकता है। कुछ दिन पहले ही देखा था आपने, तो वो कुछ भी कर सकता है। लोग इतना आगे जा चुके हैं ये लोग कि अपने पद से इस्तीफा देना, माफी मांगना, ये सारा कुछ तो है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं भाई खुली चेतावनी देने के जेड प्लस सुरक्षा है, जेड प्लस सुरक्षा है। लेकिन मैं उन सब पहलवानों के साथ हूँ जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठंड में। उन लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ के वो लोग वहां बैठे हैं, तो थोड़ा ये कहीं ना कहीं वो लोग ठीक है अपनी जगह पे। और कुछ ना कुछ तो हुआ है, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये फेडरेशन वाले लोग, मैं बखूबी इस चीज का मैं भी शिकार हूँ। मतलब इनका कुछ टाइम पहले मैं हाथरस से सेक्रेटरी हुआ करता था इसका संघ का, भारतीय कुश्ती संघ का, लेकिन वो दबाव बना के इतना हमें डोनेशन दीजिए, इतना पैसा दीजिए, तो इन लोगों का रहा था, तो मुझे मजबूरन, मतलब खिलाड़ियों के साथ अहित नहीं करना चाहता था ना, मेरे हाथ से अहित हो सकता था। तो मैंने सोचा भाई इससे तो थोड़ा सा रिजाइन देना ही ठीक है, क्योंकि उस समय इन लोगों के इतने लंबे तार हैं कि जो चाहेंगे वो आदमी जाएगा, जो चाहेंगे नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको तो अभी इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर सही है तो बाद में हो जाएगा ना सारा कुछ। अभी इस्तीफा देना चाहिए, खिलाड़ियों के साथ रहना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए। जो देश के लिए मेडल ला रहे हैं लोग, जो देश के लिए बच्चे मेडल ला रहे हैं, बेटियां हमारी आज ठंड में है, कोई अपनी इज्जत ऐसे नहीं उछालता मैडम। कहीं ना कहीं परेशान है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं आज। और जी बिल्कुल, और कोई आसानी से अपने पूरे करियर को स्टेक पे लाकर मीडिया के सामने आकर अगर इस तरह के आरोप लगाता है ना वर्षा, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि किस हद तक आप इस तरह पर उनको सवाल उठाएंगे। और वर्षा, इससे पहले मैं आपके पास वापस आऊं, हरपाल सिंह बेदी जी सर, यू आर अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, you have I think 4 decades and counting. That's the experience, sir, that you actually carry with you on a story like this. What do you think, sir, is the best way forward? Why is it so difficult for the Federation top boss to resign? I mean, he can step aside pending an investigation. No. Listen. There is no end to it if he starts like this. The simple thing is, I will tell you one thing. Simple thing is that these girls have a proof. They claim. They take a proof to Amit Shah, not to Prime Minister. Okay, Amit Shah, this is the proof. We are scared of going to police station. Please, will not listen to us. Here is the proof. These are the women who have been exploited. Finish, and then go to the police. See, without proof, you cannot hang a man, whether he is a gunda or even Kasab, who committed blunders, who was a mastermind by the massacre. He was given 2 years. So if Brij Bhushan has done anything, and as see, the whole issue has risen, is not because of there is a problem in the federation. Every federation has a problem. Every federation. You name it and they will tell you. Every player says that we have been every federation, being a cricket, you take it cricket and they are crying that we are not getting. So let's clean up the entire system. No. Mr. Bedi, what is the harm in cleaning up the entire system? It takes a lot of courage, and we must appreciate the fact that these wrestlers, sir, have put everything at stake. Are they saying that they've come out in the public, they are speaking to the media, they say that there is even a conversation. Today, Vinesh Fogart said that there is a 30-minute recorded conversation with one of the vice presidents. I just want to know if there are people so powerful, like, a Brij Bhushan, who today in front of the media is, openly challenging the sports ministry, the IOA. Why today is the IOA quiet? Listen to me. Why haven't they taken any suo motu action? Why? There is a limit to it. Listen to me. This federation has a history, checkered history. V.C. Shukla, one of the most powerful ministers, Indira Gandhi, उसके कपड़े उतार दिए थे इन्होंने स्टेडियम में. No president has ever come with the grace and this went with the grace. Remember this thing. If you have already decided that he is a criminal, then what is? 1 minute. 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 1
No, but neither has he got a clean chit, sir. That's the point. That if there is doubt, all that we can do, Bediji, is have a fair investigation. I'm having some trouble with your link. So we'll just reconnect you, Bediji. We'll just reconnect you. But Karan, okay, I think, sir, by mistake, you've just muted yourself. The logic. Mr. Bedi, I think you've just muted yourself. So why don't you unmute yourself? Yes, sir. Go on, please. What I'm saying is, when they have a proof, why they don't give it to the proof to the police and to the Home Minister? Simple as that. Let them, then they hang Brij Bhushan Singh or whatever Singh is there, that you are a criminal. But if you have a proof, then do it now. That is a problem. You have Vinesh Fogart. The second day she said, first day she said they will prove the produce. Why you are carrying on this agony? Why you are carrying on this facade? This man, if anybody involved in sexual harassment, has no place in the society, whether it is this Singh or that Singh, even is a Bahubali. Just prove the rest of the issues are totally different. Every federation, every organization has a problem. They think the boss is discriminating against him. He may be a whatever he is, Bahubali. But the main issue started with this thing. But Bediji, if there are such charges, as serious as sexual harassment on the top boss, then why do you not believe that it is simpler that pending an investigation, what's the harm that he steps aside? And you yourself are admitting that he's pretty powerful. I'm not defending him. I'm just saying I can come and allegation ki ye badmash hai, iske liye kar do. If one simple thing is there, he is not agreeing. Chalo, he's a Bahubali, he's a gunda. You come and say, look here, these are the women who have been exploited. Simple as that. Why you are asking him? Why not these girls come and that's the problem. That's the problem. Karan, isn't the approach to the entire issue a problem? Because, not the very first time, Karan, that you have this, murmur, that this disquiet that has been spoken of in the Federation. But to say, listen, why are you sitting on the streets? Why only Haryana girls are speaking? Why did they not speak up earlier, Karan? Is this the way that, you give justice and dignity to these athletes who've brought laurels to the country? You are confusing the whole issue, madam. You are confusing the whole issue. No, I have been coming. I just cleared it out. No, just a minute. Then I will. I'll just come back to you, sir. Yes, sir. We are respecting all the women. I am a father of a daughter, I'm telling you. So question is not for this thing. Question is, when they have raised this issue, this is impediment on their part to prove they come and tell not the Prime Minister, tell Amit Shah, Home Minister, this is the man your party is having, and he has done to us. Khatam. It is simple thing, because he's a Bahubali. They would do that. They have said that ultimately, Bediji, they have said that ultimately they would do that. And today you're saying essentially that the letter that has gone into the IO is pretty generic. Okay, you might be making a fair comment, but only talking on basis, Karan, of morality. Is it too much to ask for a resignation? And on top of it, the defiance that this man continues to display. He was holding a camp today in Gonda, and Karan, our reporters were reporting from there. You had just his posters all around, as if this is an open challenge. That dare you touch me, Karan. Yes, what happened today, I'll first talk about that. It was just a show of might by the president of Wrestling Federation of India. Having said that, I agree with Bedi sir. These athletes have managed to gather the attention of the country, of the media, of the concerned authorities. They were scared that nobody is going to listen to them, or they've been getting all these threats. Now they have assured themselves that the world knows about it. And now after this, the second step that they should take is go to the concerned authorities, which in this case is the police or the local magistrate, and lodge an FIR, because this is sexual harassment. This has to be taken over. This case will eventually be taken over by the police or some special committee that will be formed by the government or by the sports ministry. So they have to step out because of the fact that they're saying we have a proof. Let this whole saga proceed now to the next level. Let the concerned authorities take over. When you say, coming back to what you were saying, that can he not resign? Is resignation a big thing? If the Wrestling Federation of India is conducting an inquiry, he has to resign, come what may.
he has to resign. You cannot have the president who's been accused of sexual harassment heading a body and that same body conducting an inquiry. But if the police takes over or the sports ministry takes over or there's a special body, a committee that is formed to interrogate or take over this sexual harassment case, then he can be there. But in the name of optics and just to calm down all the anger around, Karan, he needs to step down. This is the problem. This is exactly what netas say. And today I don't understand why you and Bediji is a very seasoned journalist today, and even Varsha. In fact, we will go to Varsha. Because, when netas say that kuch proof thodi na hua hai, these are just allegations and they continue to be in office. I mean, are we saying that there is a dearth of good people, good administrators, good athletes that you cannot replace? You cannot replace the WFI head. It's not just one, it's not just two, but the girls say that there are at least six. There are at least six of such girls who've spoken up. What is the kind of precedent we are setting? Because tomorrow no one is going to be, gathering the courage, Bediji, to speak up again. Because they will remember how we've dealt with this entire issue, Bediji. If the girls have been exploited, this man should be hanged. But then give the proof. Absolutely. Then go to the Amit Shah, don't go to police. But pending an investigation, he should go. No one is saying that the girls will not provide proof. That is not what these girls are saying, sir. Listen to me. I think that there is a serious attempt right now to cover up the entire case somehow, Karan. We are trying to say that malign these girls, malign them, say it's conspiracy, and obviously because, the head of the WFI already has tried a political conspiracy. बेदी जी जो ब्रिजभूषण जी है वो तो ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र है. वो ये कहते हैं इसके पीछे कोई पावरफुल बिजनेसमैन है. ये कौन सा तरीका होता है इस तरह के एलिगेशंस पे रिस्पॉन्ड करने का? आप उसको भूल जाइए ब्रिजभूषण को. लड़कियों को चाहिए प्रूफ देना. फॉरगेट ब्रिजभूषण. These girls are very powerful. They have a full media support. Everybody supporting them. सर वो प्रूफ देंगे जब ये मामला पुलिस में जाएगा या IOA इसको लेकर आगे एक सो मोटो कंप्लेंट लेगी. एक प्रोसेस चल रहा है. अपना नाम उछालना ऐसे ही नहीं. रामेश्वर जी, आप जल्दी से सर कुछ कहना चाहेंगे बेदी जी को और करण को, उसके बाद वर्षा के पास जाएंगे. रामेश्वर जी. हाँ, मैं कहना चाहूंगा कोई अपना नाम इतने इस मंच पे आके ऐसे करके पूरी दुनिया के सामने कोई अपना नाम ऐसे नहीं उछालेगा. और कहीं ना कहीं तो गलत हुआ उन लोगों के साथ, और गलत हो रहा है. वो फेडरेशन में बहुत, मैं पहले बोल चुका हूँ. फेडरेशन में प्लीज बेदी जी, प्लीज. आपने बिल्कुल सही कहा, गलत हुआ है, मगर प्रॉब्लम है. विनीत ने खुद कहा उस दिन, पहले सुनते दीजिए, पहले दिन उसने कहा कि हमारे पास प्रूफ है. मैं यही कह रहा हूँ, जब आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, मिनिस्टर को दिखाइए. भाई और आस्किंग बिल्कुल, और प्रूफ के साथ. लेकिन बेदी जी मेरी आपसे सर एक ही बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है सर. आप सारे सवाल पूछिए, आप एथलीट से सारे सवाल पूछिए, उनको बोलिए प्रूफ दिखाइए. पहले आपने क्यों नहीं बोला, सिर्फ हरियाणा की लड़कियां क्यों बोल रही है, उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं बोल रही है. लेकिन एक भी सवाल सर इस समय ब्रिजभूषण के लिए क्यों नहीं है? एक भी सवाल इस समय ब्रिजभूषण के लिए क्यों नहीं है? मैंने सुनिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? बच्चों के साथ इस तरीके से हो रहा है, फिर आप भी उसके साथ सबसे कड़ी सजा होनी चाहिए उसके. अगर ये देखिए विनेश ने क्या कहा पहले दिन, सुनिए ना उसकी बात. उसने कहा मेरे पास प्रूफ है, मैं डर रही थी, मुझे जान का खतरा. बिल्कुल सही कहा. एक लड़की है, कैसे बोलेगी. उसके बाद सारा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हो गया, सारा मीडिया खड़ा हो गया. अच्छा फिर ठीक है, आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि पुलिस बड़ी गलत काम करती है. अब अदालत, यू गो टू द मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, say these are the allegations, these are the person exploited, why don't you take action against him? खत्म बात. इसमें क्यों बहस कर रहे हो? उसको Absolutely. बेदी जी ये तो होगा ही ना, ये तो अगला स्टेप है. आपको क्या लगता है कि सरकार इस समय सरकार की तो वेट एंड वॉच कर रही है ना? देखिए क्योंकि रूल्स होते हैं, क्योंकि आप सर हमसे ये बेहतर जानते हैं कि रेसलिंग क्योंकि एक ओलंपिक स्पोर्ट है तो सरकार इस समय डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती. लेकिन सरकार ने इशारों में ये इंडिकेट तो कर दिया है ना कि इस व्यक्ति को जाना चाहिए. एटलीस्ट जब तक ये पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता. और आप मुझे आमतौर पर बताइए सर, अगर इतने ग्रेव चार्जेस कोई लगाता है, उनको सड़क पर आने को वो मजबूर होते हैं वर्षा,
तो ऐसा क्या है कि सारे सवाल से फीमेल एथलीट से पूछे जा रहे हैं और इस समय बृजभूषण जी से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा है? वर्षा, नहीं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वे विनेश दीदी बोल रहे कि मेरे पास प्रूफ है, तो प्रूफ दिखाना चाहिए उनको। अगर ऐसे बोलने से आरोप सिद्ध हो जाता है क्या? क्योंकि मैंने भी कुश्ती को देखा है, मैंने भी 6-7 साल क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसको उसकी पहले रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ये आप कहना चाहती है? नहीं मैडम, क्या पहले उसका प्रूफ दिखाए, साबित करिए कि कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे किया। यही तो सवाल है वर्षा, यही तो दिक्कत होती है। पुलिस के पास जाके बोल सकते थे, साई में डायरेक्टर को जाके बोल सकते थे, किसी को तो बोलते हुए चीफ कोच को जाके बोलते। सारा वर्षा, सॉरी, तो आपको क्या लगता है वर्षा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ जिसकी तरफ आप खुलकर इशारा कर रही है। बीते 20 मिनट से वर्षा आप उसी की तरफ इशारा कर रही है। मुझे ये बताइए कि ये लड़कियां झूठ क्यों बोल रही है? क्या लगता है आप? लड़कियां सच है, लड़कियां अगर सच है तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। ऐसे कैसे, ऐसे बोलने से सिद्ध हो जाता है कि कोई आरोपी है? नहीं तो बृजभूषण जी एकदम साफ छवि के हैं। रामेश्वर जी, हम सब बेकार में ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वर्षा और बेदी जी, करण जी, सबने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है कि भाई उन्हीं की गलती है, लड़कियों की गलती है। पहले No, you're doing a wrong thing. I'm sorry, I'm going to get off the show now. रामेश्वर जी, I'm sorry, I'm going to get off the show. Whoever no, is, I'm sorry. Karan, one second. Karan, you've been changing your position. No, either you let me talk. If you try to tell me I'll walk off the show, please do not try to threaten me or dictate the terms here on the show, Karan. One thing is clear: if you're asking questions today of the girls, fair enough, Karan. But why no questions? I'm sorry, this is not right. What you are doing is not right. Who has the audacity to cock a snook at everyone? He's a very senior guy. The sports minister has given the clearest of indications, Karan, that this man has to go. I'm sorry. What is wrong in saying that he should step aside pending an investigation, Karan? I will get off the show because you are... I'm just repeating what you're telling us. I'm sorry. This is not the way to talk. This is not the way to talk. He's got 40 years of What is not the way to experience. talk? You are telling both me and him that we are not supporting the girls. You're defending him. Exactly my point. That's what I said, Karan, that you are defending him. Rameshwar ji today is the only one on the panel who has questions for him. So you're saying he has 40 years of experience. How is that important versus the charges that have been leveled against him, Karan? Karan, are we saying because someone has 40 years of experience, he cannot be guilty of sexual harassment? Are you giving him a certificate, Rameshwar ji? Rameshwar ji, सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाएंगे ना इस चीज का। अगर प्रूफ है तो प्रूफ भी मिलेगा ना। धीरे धीरे आप देखते, आपको फेडरेशन से इस्तीफा देना चाहिए था, फेडरेशन बंद करनी चाहिए थी, होना चाहिए। आप बच्चों के साथ आना चाहिए था, बच्चों आपको दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या है, वहां आना चाहिए था। आप जाइए अमित शाह जी से मिलिए कि हमें कुछ नहीं देना ना, ये हमारा। Why don't you tell रामेश्वर जी कि क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत इनको पता होना चाहिए ना, फेडरेशन से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। I am not going to talk to somebody who's having fun over there at the behest of these athletes. All right, he's having 2 minutes of airtime. You can give time to him. He has a question he's asking. What is your problem? Why is it difficult for you to believe the girls? Can you ask everybody to keep quiet? I need just 60 seconds, please. ये ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले बच्चे हैं, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां हैं, ओलंपिक में और देश के लिए नाम कर रहे हैं वो बच्चे हैं। ये ऐसे नहीं है, ऐसे आगे उठ के। भाई साहब, आपने ज्ञान बांट दिया दूसरे की। हाँ, ज्ञान तो आप लोग दे रहे हैं ज्ञान। हो गया, अब सुन लो ये ज्ञान। आप यहाँ 2 मिनट के फेम के लिए आए हो, जब आपको मिल जाए ना तब चुप हो जाना, हम आगे डिबेट ले जाएंगे, उस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर लेंगे, ठीक है? अपने फेसबुक पे चढ़ाना है, चढ़ा देना, ये जाके होगी बात। अब मैं बोल लूं Karan, I think we must not get personal, Karan. It is for the sport of the country. It's for our girls. It's for the country, Karan. This is not the way to talk. I don't think, Karan, it's important for you to pass those personal comments against Rameshwar. He does not agree with you. Fine. You have another viewpoint. Totally fine. But he's asking you a simple question, Karan. He's saying, what is it that you do not believe about these girls and you want to pit this against
40 years experience of this 6-time member of parliament and today someone who has serious allegations of sexual harassment. It is going That to is be, it. oh my God, will you go back and listen to this debate? You will feel embarrassed. You will feel embarrassed of what are you asking us? Really, Unbelievable stuff you're asking me, yaar. Unbelievable stuff you're asking me. You are accusing me that I'm not supporting the girls. Question this man. You are telling two Do you have a individuals brief? from Do a you have a sports brief for background. him? Forget about me. That Bedi sir is 40 years of experience. That's how you All the introduced more it. important He for is you to supporting raise the your girls voice, and your Karan. All the more Look, important for you to I'm raise sorry. your voice I'm sorry. and listen to other I'm sorry panelists. with folded hands. I am not on this television show to get maligned about things. All right. I'm sorry to say this is the first time I'm going to leave this debate on a channel that I That's work totally with. your I'm choice, really Karan. sorry for this. Yes, absolutely. I'm not here to sit and get maligned and get accused of things that I've not done. I've been a sportsman. I'm a nationalist. I'm a sportsman. Do you know that? And you know you should be knowing that. Answering questions. That is your call. If you let me answer, I will answer your question. I'll give you one more chance. Ask the question properly and let me answer, and I will reply. जी से लगातार सवाल कैसे पूछ सकते हैं? लड़कियों को बोलिए कि प्रूफ दिखाइए. रामचरण कौन है? फिर क्या किया जाए? So if somebody is leveling allegation, ये किस तरह की भाषा है? Come on, man. यही तो दिक्कत है. रामेश्वर जी I'm sorry guys, I'm leaving this debate. This is not time. Nonsense. क्या? Sorry. All right, Karan. I think it'll be totally fine. He's walked off the debate. लेकिन मुझे ये बताइए रामेश्वर जी, कई लोगों को इस समय दिक्कत क्यों हो रही है कि बृजभूषण जी से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये फेडरेशन में है और कहीं ना कहीं ये उनका पार्ट प्ले कर रहे हैं उन लोगों का सही के साथ नहीं साथ देना चाहते. आप इसे बैठा के जलील ना करिए किसी को ये कि वो उसके फेडरेशन के कोई बोल भी नहीं सकता. मतलब आपकी बेदी जी सर, उनका अपना व्यू पॉइंट है सर, आपका अपना व्यू पॉइंट है. आपने अपनी बात रखी है, ऐसे ही वो अपनी बात रख रहे हैं सर. बात रखना इज डिफरेंट. नहीं, बात रखना है, सबकी बात तो सुननी चाहिए ना. यही तो बात होती है सर. डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं. आप सर उनको अपना व्यू पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आऊंगी. गलत बात ना करें. बेदी जी सुनिए. बेदी जी आप सुनिए, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं. बेदी जी आप गुस्सा ना होइए, मेरी बात आप गहराई को समझिए. जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या करना चाहते हैं वो, तो इस पे आप आइए, आप बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों से बात करिए. भाई बच्चों हो क्या गया आपको, बोलिए सर. सर जी, रमेश्वर जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सही है. जो आप हमारी एंकर हैं उनकी बात भी सही है. सिंपल मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी. मैंने आपको बार बार कहा कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी बहन, ऐसा. और जो इंसान ये वो तो कोई कमीना ही होगा, जानवर होगा जो जो किसी को सपोर्ट करेगा, जो वुमन का एक्सप्लॉइटेशन करेगा. ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. उसको तो इज्जत ही नहीं करनी चाहिए. सर भाषा का ध्यान रखते हैं बेदी जी, सर भाषा का ध्यान रखते हैं. नेशनल टेलीविजन पे है सर. ठीक है, मतलब जो भी ऐसा कोई करेगा वो इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है, इसमें भाषा की जगह यही है ना. अगर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में बिलीव करता है, ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग. क्या ये हम मानते हैं. इसमें कोई भाषा, तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली मैंने. मेरा ये कहने का मतलब है, सुन लीजिए आप, दो इशू हैं. एक तो फेडरेशन का अंदर का झगड़ा है, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का है. जो सारा बहस जो हो रही है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में. जिस दिन विनेश जी ने ये कहा पहले दिन, आई नो दीज पीपल वेरी वेल, आई हैव कवर्ड विद देम, दे आर वेरी डिसेंट प्लेयर. कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, जो आपने सही कहा कि एक लड़की कैसे आके कही. ठीक है, अब ये भी है कि पुलिस के पास जाना, अपनी बेइज्जती होती है, फिर वकील जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ, यही बात, इसीलिए प्रोटेस्ट किया उन्होंने. हर आदमी इज्जत चाहता है कि छोड़ो यार, क्या करना है. अच्छा, अब आप बाहर आई हैं, आपने कहा कि हमारे पास सबूत है. मेरा सिंपल रिक्वेस्ट ये, सिंपल, छोड़िए क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन लड़कियों को जाना चाहिए अमित शाह के पास, होम मिनिस्टर. कहेंगे कि हम पुलिस को इसलिए नहीं बता सकते, हमारी सवाल है. ये प्रूफ है आपके पास, मेरे दे रहे हैं कि आप हमारी नियुक्ति रखेंगे, और ये प्रूफ है ये आपके पार्टी का मेंबर है. खत्म. सर 5 मिनट, एक मिनट सर, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी लोग जंतर मंतर पे गए हैं, तो क्या उनकी बात सुनी नहीं गई है?
होम मिनिस्टर साहब अगर एक बार संज्ञान लेते, अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेजते, वहाँ जाते। मेरी बात भी सुनिए ना, अब क्या करेंगे? यही एक तरीका है एट द मोमेंट कि ये मामला इतना हो गया, सारी जगह सुना जाता है। आप जाइए प्राइम चीफ होम मिनिस्टर के पास, और ये भी इशू बनेगा कि होम मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर दिया। ये भी है ना, आप तो मीडिया वो कभी इनकार नहीं करेगा। आप प्रूफ ले जाइए कि ये प्रूफ है, हम इसलिए पुलिस को नहीं बताना चाहती कि हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली की इज्जत है, ये है, ये प्रूफ है, आप देख लीजिए। ये आपके बेरी जी, आपको बेरी जी, एक 5 मिनट सर, कुछ टाइम पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, वेशभूषा शरण जी का, माननीय अध्यक्ष जी का। तो उनका ये कुछ टाइम पहले एक पहलवान ने कुछ जाके उनके कान में कहा, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। आप साहब सोचिए, अब जब आदमी मंच पे कर सकता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी बात से सहमत ना हो, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात बेरी सर, मेरी बात मानना मत, सुन लीजिए मेरी बात जी सर, मानना मत, मेरी बात सुन तो लीजिए कम से कम जी। तो अब ऐसे में क्या करें खिलाड़ी, फिर कहां जाते? क्योंकि फेडरेशन सर आपसे बेहतर नहीं जानता, सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट के। मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो पॉइंट उसमें कोई बहस नहीं है, बहस मगर इसकी ये हो रही है, ये बहस नहीं हो रही कि वो किस तरह बिहेव करता है, बहस ये हो रही है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कि उसने कैसे, ये मेन इशू है, अदरवाइज देयर इज नो इशू। बाकी तो फेडरेशन में झगड़े जड़ते रहते हैं। अब जो ये इशू जो बढ़ गया है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। अब बार बार ये कहना कि लड़कियों को कहेंगे, वो कहता है, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, फिर कैसे, कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट का जज करेगा, सीबीआई करेगी, चलिए पुलिस को छोड़िए, हाई कोर्ट का सिटिंग हाई कोर्ट के जज को बिठाइए, ये WFI तो करेगी नहीं, उनको करना ही नहीं, सिंपल है, कोई इंक्वायरी तो होगी ना भाई। सर जो बैठे हैं बच्चियां, जो मेरी बहन बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं वहां, सर आपके बच्चे होंगे, वो अलग तो है नहीं? मेरी भी है, फिर मैं उनकी इज्जत करता हूँ भाई, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि हाई कोर्ट के जज केस करें, ऐसी सजा दी जाए कि अगला आदमी सोचे बाद में कि मैंने क्या किया है, मगर आपको प्रूफ तो अच्छा, बचने के लिए तो कोई भी कहेगा मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब सामने आ रहा तो कुछ ना कुछ जांच करनी चाहिए, कुछ ना कुछ जाना चाहिए। पहली बात तो सर मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है, अगर उनके इस ओहदे पे मैं होता, नाक का सवाल ना बना के, मैं देश के जो आज तक मेरा नाम रोशन किया मेरे देश का, मैं उनकी तरफ जाता, उनको उनसे बात करता, बैठने की कोशिश करता, मैं नाक का सवाल नहीं बनाता अपना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, यू आर टॉकिंग वेरी जेन्युइनली, बिल्कुल सही कहा, मगर अब इसका क्या किया जाए? एक ही है कि आप हाई कोर्ट के जज को कहें, इंक्वायरी, सिटिंग जज को, रिटायर्ड को नहीं, सिटिंग जज को कहें कि इंक्वायरी करे, ये प्रूफ दिए जाए जज को, ये बोला जाए कि इन प्रूफ को सील्ड पेपर, जैसे सील्ड आज का फैशन है, सील्ड लिफाफे में रखें, हमारी इज्जत का सवाल है। आप देख लीजिए जज पर, अब जज पर तो इतबार करोगे हाई कोर्ट के, गवर्नमेंट रखे कि ये सील्ड है, हम नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन बेदी जी और रामेश्वर यादव जी, आप दोनों ने सवाल जवाब का पूरा ये सिलसिला किया सर बीते 5-7 मिनट। मेरा एक ही सवाल अभी भी है कि बेदी जी जो बोल रहे हैं कि आगे इस तरह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एथलीट्स को प्रूफ देना होगा, सामने आना होगा, ये बिल्कुल सारी बातें सही है, लेकिन रामेश्वर जी जो बात कह रहे हैं वो भी जरूरी है बेदी जी, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब तक अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो टॉप बॉस हैं, जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं, अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं बेदी जी, तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है? मैं और मेरे जैसे लोग यही कहना चाह रहे हैं। आप समझिए, मैं और मेरे जैसे लोग यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। सुन लीजिए, परसों 22 तारीख को मीटिंग है, 22 तारीख को उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग है, आप वेट कर लीजिए 22 तारीख तक जनरल बॉडी में। बेदी जी, इसमें क्या होता है ना कि यू आर अलाउइंग हिम टू डिक्टेट हिज टर्म्स, you're allowing him to dictate his terms, यही दिक्कत होती है। And in a case as sensitive as this, sir, and you are a very very seasoned journalist, but we disagree on that. देखिए जी, बिल्कुल, रामेश्वर जी, बेदी जी, वर्षा, and everyone who's joined us, I thank all of you. Bedi ji, we've run out of time, sir, but the promise is that Republic will keep asking the questions, and we do not care whether this is making some people very uncomfortable. Rameshwar ji, आपने भी हमसे बात की, sir, बहुत-बहुत शुक्रिया. Let's take this across to Niranjan, who's taking ahead this edition of The Burning Question. Niranjan. Well, there's a sequence from Davos at the World Economic Forum, Deepti, it's gone completely viral, and it involves what happened in India. It's directly linked to India's battle against COVID-19. Let's go straight to that.
He's the chief executive officer or the CEO of pharma giant Pfizer. Encountered at Davos, there's a sequence of a media house at Davos questioning the Pfizer boss about their vaccine and whether they went on a global campaign to run down every other vaccine to push the Pfizer vaccine. And we in India, for the last 3 years, have been asking questions on whether there was a campaign to target made in India vaccine. And this one sequence proves what Indian vaccines, namely Covaxin and Bharat Biotech, have been going through. A hit job, there's a political face-off over it. Take a look. The confrontation of Pfizer CEO at Davos has become the biggest talking point globally. Mr. Borla, can I ask you, when did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. Answer that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologise to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Back home, this has triggered a massive political face-off. Union Minister has just said, just to remind all Indians, that Pfizer tried to bully the government of India into accepting conditions of indemnity, and the Cong trio of Rahul Chidambaram and Jairam Ramesh kept pushing case of foreign vaccines during COVID. BJP has reminded Congress of its unrelenting push for Pfizer vaccine. Tweet of Arvind Kejriwal, who said, and he quoted, that the Pfizer vaccine should be made available as soon as possible for the children. The Congress party too was batting for all kinds of relaxations to be given to the Pfizer vaccine, even though they were untested, even though it was not sure whether they would be effective. They even went on to the extent of saying that there was calf blood in it, and they tried to create all kinds of vaccine hesitancy. Till date, no Congress leader of substance has shown whether he's taken the vaccine or not. In fact, they have gone on to say COVID bhi bahana hai, mask bhi bahana hai. The Congress in return has called the Union Minister a liar. Didn't Congress try to endorse foreign-made vaccines during the peak of pandemic? Bureau Report, Republic TV. In fact, we've seen that entire sequence of how this Pfizer CEO was confronted at Davos. And I have Rajiv Pandey, spokesperson of the BJP, joining us on the debate on the burning question, and Lokesh Jindal of the Congress party joining us. Lokesh, I remember every single debate with Arnab, every single update, every single comment made by the Congress leaders, every single controversy that your party tried to rake up using all foreign vaccines. I mean, you did not trust Covaxin, you did not trust Indian vaccines, Indian technology, and your party kept pushing foreign vaccines. Now my question to you is, across the world, Lokesh, Americans are asking questions of Pfizer, okay? Europeans are asking questions of Pfizer. So much so that the world's biggest journalists, people who are in Davos at the World Economic Forum, are confronting companies like Pfizer. You just do a basic, so check on social media, and you'll realize how these pharma people are being questioned, right? Why did your party fall prey to it? Were you part of the campaign? Let's be honest, was your party part of the Pfizer campaign? Lokesh? You pushed for it. In 2021, don't laugh, you pushed for we were facing a major hurdle. No. Get it right. In 2021, we were facing a major hurdle. Our what domestic hurdle? demand was way higher than what was the production capacity of the domestic vaccine makers. Now the government, it gave emergency approval to Covaxin without even completing phase 3 trials. But
The people, they were dying on the streets, but the government Lokesh, was busy. Okay, Lokesh, what vaccine did you get? Lokesh, what vaccine did you get? One minute. Which has far Brother more Lokesh. credibility than Bharat Biotech. Lokesh, brother, what vaccine have you got? Can I ask you what vaccine have you got? I got Covishield. Covishield, okay. I got Covaxin, okay. Both my shots are Covaxin and I'm completely fine. And I'm not like my Chinese brothers I who got are facing COVID. I a got third, COVID twice. fourth/fifth wave, right? But you are the same guys who said there was I got cow COVID fat. twice after taking the vaccine. Your party said there was cow fat in Covaxin, your party, and you are still saying that Covaxin got illegal approvals, right? Didn't they say that, Rajiv? What did they say about the Covaxin vaccine? I said that your the party ran a campaign against Covaxin. Your party ran a campaign against Covaxin. Your party ran a campaign against Covaxin. Lokesh, it's more important to make some money. Hear the other side. Not money. Here, Rajiv. Lokesh, calmly. Here, Rajiv. Calmly hear him. For 30 seconds. Rajiv. What I'm saying, Niranjan, more than 220 crores vaccine doses are administered in this country, and country is doing very fine. Unlike China, which has added 60,000. 1 second. How many people died in 2021? By their inaction, because Congress party has tried to spread rumor. Akhilesh Yadav said, I will not take vaccine, and then he took vaccine. So what I'm trying to say, Congress party is always doing, they do not talk about any issues. They are trying to destroy this country from within. How many people died in 2021? If you do anything, Congress will come forward. Lokesh, can I tell you something, Rajiv? Rajiv, he's trying to divert. Let's come down to brass tacks. Rajiv, just let's come down to brass tacks. Okay? Lokesh, don't. If you think shouting will make you win, it's not. Nobody's listening to you. It's not shouting, sir. 1 minute. Lokesh, don't try and shout your way through the debate. Don't try and shout your way through the debate. Don't try and shout your way through the debate. Hear me out. See, this is not done. This is not done. Lokesh, not done. Hear me out. World Health Organization. Hear me out. Don't shout over me, man. Hear me out, Lokesh. An approval to no, wait. Don't speak over me. I'm asking you a question. He is relying more on... No, wait, Rajiv, wait. I'm asking him a question. Rajiv, I'm asking him a question. Rajiv, I'm asking him a question. Hold on. Not Indian agencies. Rajiv, hold on, yaar. Lokesh, did the Congress party, did Shashi Tharoor, did Congress leaders, Chidambaram, Jairam Ramesh, did they question Covaxin? Did they bat for Pfizer? Yes or no? Did your party leaders bat for Pfizer? Yes or no? Just tell me yes or no. We batted for vaccines. No. We batted for vaccines. No. For protecting the lives of Indians. Protecting the lives of people. They batted against Covaxin. Black marketing and corruption in the name of vaccine. They batted against Covaxin. We were batting for the people of India. No, y'all batted. You know what? At some point, people who love your party. At some point, people who love your party. Wait. At some point, people who love your party. 1 minute, Lokesh, yaar, listen. At some point, people who love your party even said, India should be humble. We don't have vaccines. We should take the Chinese vaccines. Am I right or wrong, Rajiv? Did they say or not that we must take Chinese vaccines? You know, this Congress party said we cannot vaccinate all the people. Yaar, Lokesh, don't give gyan, yaar. Talk about China. No, you won't have the guts to say a word about China. I am saying, no, they asked for Chinese vaccine. You talk about China, no, if you have the guts. Always acting like an agent of the foreign companies. They get kickbacks. Don't speak over him, yaar. You remember Force scam? How much money Congress party got out of this? When the government had not yet made sure that every Indian was inoculated, why was vaccine distributed to the neighboring states?
Okay, let me ask you about one more. Let me ask you one more question. Rajiv, you know the problem is, you know, first of all, these guys. I'll tell you, Rajiv. I'll tell you. There are similarities between the Pfizer CEO and Congress leaders. Wait, Rajiv. There are Rajiv. Wait. Maybe Congress party were getting. Wait. There are similarities between these two companies. No, wait. There are similarities between brother Rajiv and Lokesh. Calm down. There are similarities between the Pfizer CEO and the Congress party. I'll tell you what the similarities are. You ask them whether they batted for Pfizer, they talk about the death toll. You ask them whether they attacked Covaxin, they talk about something else. You ask them whether they batted for the Chinese vaccine, they start talking about how badly the government handled it. Are you crazy? China is struggling. We are in a better position. We don't even have 100 cases per day. To make sure that no person dies due to lack of vaccine Oh availability. God, yeah. You know, Lokesh, you can go back to 2020 and you can keep fighting with China, okay? But we are in a better position. We are in a fantastic position, Lokesh. You can keep fighting, cribbing till the cows come home. Lokesh, no, let me give him the reality. No, wait. When we talk about the trade relations, okay, let me actually give him the reality of how many COVID cases. Let me give him the number of COVID cases that China has reported in the last few days. Do you have any stats with you? Lokesh, do you want to enlighten me with stats or should I give you some stats? You tell me whether you have any stats about China, your favorite country, and then I'll tell you. There is something called white lies and then there is statistics. No, let me tell you. You know, there is a saying, there is something called 7-day average in China is 36,000. Lokesh, I'll end on that note. 7-day average is 36,000 and that's your Chinese favorite vaccine doing its trick. Your favorite vaccine, the Chinese vaccine doing its trick in China. 36,000 is the average number of cases in China. Good luck to you, Lokesh. Good luck to you. Good luck to you and your vaccine lobby. Thank you very much, Lokesh and Rajiv. I think you know what happened in Davos. You should be thanking the journalist who went and asked that Pfizer boss. He had some courage. Thank you very much. Coming up on the debate, we're going to debate this at 10 p.m. Arnab is back with his debate. We've been questioning that lobby that has been batting against the Made in India vaccines, and that sequence from Davos is being talked about across the country. Thank you for watching. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम आग से बचाए। When timeless European design meets cutting-edge technology, it's QO. QO, European bath lounges. 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम आग से बचाए। Why we see all these wrestlers who have gathered here, Sakshi Malik, Vinesh Fogart, Bajrang Punia, who are sitting right here, and more of these aspirants, these budding wrestlers who have gathered here in huge numbers, because it is really about their careers, their future. It is about the youth of our country. Senior wrestlers are saying that they are proud of these children who are raising their voices, who have come right here and who have had the courage to speak up against Brij Bhushan Sharan. हो गया बस Sir, you said it is a political vendetta. You are not replying. Are you condemning your son's act or not? पूरा मेरा बेटा को पुलिस ने भिजाया में सरेंडर कर दिया। पुलिस वाला एक्शन लेके वो चीज पे नहीं। मानते हैं कि नहीं कि वो गलत काम किया? आप पूरा देखने के बाद आप बताओ पहले। We've got an iconic policeman on our show.
आपका पुलिस का सफर बड़ा आइकॉनिक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपका सफर कैसे शुरू हुआ? व्हाई डिड यू चूज टू जॉइन द आईपीएस? मैंने तो तैयारी की थी पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, पर कुछ संयोग ऐसा हुआ कि 2 पर्चे देने के बाद मेरी आंख में कुछ समस्या हो गई। इलाहाबाद में आई स्पेशलिस्ट जो सबसे अच्छे थे, उन्होंने इलाज किया, पर उनके पूरे इलाज के बावजूद मेरी आंख ऐसी नहीं हो पाई कि मैं इम्तिहान में बैठ सकूं। और 3 कंपल्सरी और 2 पर्चों के आधार पर मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं आईपीएस में मैं नंबर 1 पोजीशन पे हूँ। इस तरह से आईपीएस में मेरा सिलेक्शन, आप मुझे एक्सीडेंटल पुलिस ऑफिसर भी कह सकते हैं। Right now we are at Chhatrasal Stadium, and what we have got to know from the wrestlers who are training here at Chhatrasal Stadium, from where these big wrestler and athletes Bajrang Punia, Ravi Daya have practiced and have gone to the nationals and played Olympics. Now we are learning that all these wrestlers will be participating the dharna which is going on at Jantar Mantar, and they all will be participating, and they have said that their movement is today in support with Bajrang Punia and with other athletes and wrestlers. For we cannot weep in joy and pride when Sakshi Malik, Bajrang Punia, Vinesh Phogat, Sangeeta Phogat and many others fight and give their sweat and sacrifice to win us medals, to make us proud. We can't now therefore look away when these national icons are reduced before our very eyes to fighting a lonely battle against sexual exploitation and abuse and corruption. We are for the wrestlers and against the politician. The in-flight pervert who urinated on a senior female co-passenger cannot play victim. The airline that refused to act cannot wash its hands off with delayed and very cursory action. It is only the Republic Media Network's non-stop campaign which has ensured that this pervert is terminated from his job. VVIP racism is when common citizens say we are not going to be treated like second-class citizens anymore and taken for granted. Because India has had enough of common citizens being made forced to put up with this by people who are drunk on power and their bratish sons and daughters. When there is one rule for the common man and one rule for VVIPs and their brats and netas' children, that is VVIP. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। When timeless European design meets cutting-edge technology, it's QO. QO, European bath lounges. 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। When timeless European design meets cutting-edge technology, it's QO. QO, European bath lounges. Right now we are at Chhatrasal Stadium, and what we have got to know from the wrestlers who are training here at Chhatrasal Stadium, from where these big wrestler and athletes Bajrang Punia, Ravi Daya have practiced and have gone to the nationals and played Olympics. Now we are learning that all these wrestlers will be participating the dharna which is going on at Jantar Mantar, and they all will be participating, and they have said that their movement is today in support with Bajrang Punia and with other athletes and wrestlers. हो गया बस। Sir, you said it is a political vendetta. You are not replying. Are you